श्री पंचमुखी हनुमत् कवचम्। अस्य श्री पंचमुखी हनुमत् कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः श्री हनुमान देवता राम बीजं मम शक्तिः चंद्रः कीलकम्। ओम ह्रौं कवचाय हुं ह्रौं अस्त्राय फट्। ओम हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशकराय स्वाहा। श्री पंचमुखी हनुमत् कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमानीति शक्तिः हनुमत्प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् वन्दे वानरनारसिंहखगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा। हस्ताब्जैरसिकेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिम्हलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम्। श्रीरामदूताय अंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरीदहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तरालङ्घिताय पिङ्गलनयनायामृतविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अंगदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहित रामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागम पंचमुखी हनुमन् मन्त्रजपे विनियोगः। ओम हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वषट् स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तम्भनाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय डम 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 आकर्षणाय सकलसम्पत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। उच्चाटने ओम ढम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं ङं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं छं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ओम पश्चिममुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकलविषहराय स्वाहा। ओम उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय
नीलकण्ठाय पञ्चमुखी हनुमते स्वाहा। ॐ अञ्जनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्माण्डनायकाय पञ्चमुखी हनुमते भूतप्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्षग्रह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकलशत्रुसंहारणाय पञ्चमुखी हनुमद्वरप्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रुनिवारण द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसम्पत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवसङ्करं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तु पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदाम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकम् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदाम् तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम्। श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री हनुमत्स्तोत्रम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणम् नानारत्नसमायुक्त कुण्डलादिविभूषितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्य पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ते समप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षड्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोऽर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनम् सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतेः यः करोत् यत्र सन्देहं स याति निरयं ध्रुवम्। श्री हनुमते नमः। अथ श्री हनुमत् पञ्चरत्नस्तोत्रम्। सं सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं ह ह ह ह हसितं गर्जितं मेघछत्रम् तं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षं बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं साकिनीनां
हुं हुं हुंकारबीजं हनति हनुमन्तं हन्यते शत्रुसैन्यं दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभूतलं योगिनीवृन्दरूपं छं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं क्षेम 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारं कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपं राम 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनचरितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं 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 वेदतत्त्वं बहुरिचयजुषं श्यामचाथर्वरूपं कं 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 कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले तोटितं नागपाशं ॐ ॐ ओङ्काररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रं सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वं श्रीरामदूताय अञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरीदहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तरालङ्घिताय पिङ्गलनयनायामृतविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहित रामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखी हनुमन् मन्त्रजपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वोषट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तम्भनाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकलसम्पत्कराय पञ्चमुखी वीरहनुमते स्वाहा उच्चाटने ॐ ढं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखी हनुमते परयन्त्र तन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा कं खं गं घं ङं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं छं स्वाहा इति दिग्बन्धः ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुखी हनुमते ठं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा ॐ पश्चिममुखाय गरुडासनाय पञ्चमुखी वीरहनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा ॐ उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठाय पञ्चमुखी हनुमते स्वाहा ॐ अञ्जनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्माण्डनायकाय
पंचमुखे हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष ग्रह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहारणाय पंचमुखे हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जम 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रुनिवारण द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसम्पत्करं परम् चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशङ्करम् पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणम् षड्वारं तु पठे नित्यं सर्वदेववशीकरम् सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदाम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकम् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदाम् तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम्। श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री हनुमत्स्तोत्रम्। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमम् पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणम् नानारत्नसमायुक्त कुण्डलादिविभूषितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्य पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ते समप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षड्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनम् सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतेः यः करोत् यत्र सन्देहं स याति निरयं ध्रुवम्। श्री हनुमते नमः। अथ श्री हनुमत् पंचरत्नस्तोत्रम्। सं सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं ह ह ह ह हसितं गर्जितं मेघछत्रं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षं बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं साकिनीनां हुं हुं हुंकारबीजं हनति हनुमन्तं हन्यते शत्रुसैन्यं दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभूतलं योगिनीवृन्दरूपं छं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं क्षें 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं
मुच्यते बिम्बकारं कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपं राम 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनचरितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं 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 वेदतत्त्वं बहुरिचयजुषं श्यामचाथर्वरूपं कं 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 कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले तोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ओङ्काररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वं श्रीरामदूताय अञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरीदहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तरालङ्घिताय पिङ्गलनयनायामृतविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहित रामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखी हनुमन् मन्त्रजपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वोषट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तम्भनाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकलसम्पत्कराय पञ्चमुखी वीरहनुमते स्वाहा उच्चाटने ॐ ढं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखी हनुमते परयन्त्र तन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा कं खं गं घं ङं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं लं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं छं स्वाहा इति दिग्बन्धः ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुखी हनुमते ठं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा ॐ पश्चिममुखाय गरुडासनाय पञ्चमुखी वीरहनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा ॐ उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठाय पञ्चमुखी हनुमते स्वाहा ॐ अञ्जनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्माण्डनायकाय पञ्चमुखी हनुमते भूतप्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अन्तरिक्षग्रह परयन्त्र परतन्त्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकलशत्रुसंहारणाय पञ्चमुखी हनुमद्वरप्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं
सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसम्पत्करं परम् चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशङ्करम् पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणम् षड्वारं तु पठे नित्यं सर्वदेववशीकरम् सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदाम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकम् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदाम् तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम् श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री हनुमत्स्तोत्रम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणम् नानारत्नसमायुक्त कुण्डलादिविभूषितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्य पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ते समप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षड्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोऽर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनम् सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतेः यः करोति यत्र सन्देहं स याति निरयं ध्रुवम् श्रीहनुमते नमः। अथ श्री हनुमत् पञ्चरत्नस्तोत्रम् सं सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं ह ह ह ह हसितं गर्जितं मेघछत्रं तं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षं बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं साकिनीनां हुं हुं हुंकारबीजं हनति हनुमन्तं हन्यते शत्रुसैन्यं दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभूतलं योगिनीवृन्दरूपं छं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं क्षेम 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारं कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपं राम 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनचरितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं 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 वेदतत्त्वं
बहुरिच यजुषं श्याम चाथर्वरूपं कं 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 कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले तोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ओङ्काररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वं श्रीरामदूताय अञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरीदहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तरालङ्घिताय पिङ्गलनयनायामृतविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहित रामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखी हनुमन् मन्त्रजपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वषट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तम्भनाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकलसम्पत्कराय पञ्चमुखी वीरहनुमते स्वाहा उच्चाटने ॐ ढं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखी हनुमते परयन्त्र तन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा कं खं गं घं ङं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं छं स्वाहा इति दिग्बन्धः ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुखी हनुमते ठं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा ॐ पश्चिममुखाय गरुडासनाय पञ्चमुखी वीरहनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा ॐ उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठाय पञ्चमुखी हनुमते स्वाहा ॐ अञ्जनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्माण्डनायकाय पञ्चमुखी हनुमते भूतप्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अन्तरिक्षग्रह परयन्त्र परतन्त्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकलशत्रुसंहारणाय पञ्चमुखी हनुमद्वरप्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रुनिवारण द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसम्पत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशङ्करं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तु पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं
सर्वकामार्थसिद्धिदाम् अष्टवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् नववारं पठेन्नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकम् 10 वारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् 11 पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदाम् तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम् श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री हनुमत्स्तोत्रम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिबर्हणम् नानारत्नसमायुक्त कुण्डलादिविभूषितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्य पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्ते समप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षड्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनम् सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतेः यः करोति यत्र सन्देहं स याति निरयं ध्रुवम् श्रीहनुमते नमः। अथ श्री हनुमत् पञ्चरत्नस्तोत्रम् सं सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं ह ह ह ह हसितं गर्जितं मेघछत्रं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षं बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं साकिनीनां हुं हुं हुंकारबीजं हनति हनुमन्तं हन्यते शत्रुसैन्यं दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादं ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभूतलं योगिनीवृन्दरूपं छं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं क्षेम 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारं कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपं राम 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनचरितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं 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 वेदतत्त्वं बहुऋचयजुषं श्यामचाथर्वरूपं कं 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 कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले तोटितं नागपाशं ॐ ॐ ओङ्काररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रं संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे
राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वम्।